ठीक है, begin with economic survey of 2024-25. ठीक है, last class was basically for the budget. So now we are starting with the economic survey. So the current survey just read on the number of chapters which we have to cover. Chapter number 1 is basically the state of economy. First chapter explains basically state of economy. So it is a kind of a synopsis for the entire economic survey. मतलब कंप्लीट सर्वे अगर नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमने चैप्टर 1 अगर कर लिया तो शॉर्ट पार्ट के लिए वो यूज हो सकता है. बट सिंस वी हैव टू कवर डिफरेंट चैप्टर्स इन डिटेल, तो अगर आप फिर उस चैप्टर को अगर रेफर ना भी करें तो भी काम चलेगा. मतलब अगर आप पूरा सर्वे नहीं पढ़ रहे, सिर्फ स्टेट ऑफ इकोनॉमी पढ़ रहे, तो वो शॉर्ट में हो जाएगा पूरा. और अगर आप डिटेल पढ़ ही रहे हो तो फिर चैप्टर 1 को आप इग्नोर भी कर सकते हो. सो फर्स्ट चैप्टर इज स्टेट ऑफ इकोनॉमी. दैट मीन्स इस चैप्टर के अंदर जो कंटेंट होगा वो रिपीट होगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर. स्टेट ऑफ इकोनॉमी विल बी एक्सप्लेनिंग द पब्लिक फाइनेंस पार्ट ऑल्सो, मॉनेटरी मैनेजमेंट पार्ट ऑल्सो, ग्रोथ पार्ट ऑल्सो, इन्फ्लेशन पार्ट ऑल्सो. बट उनके लिए फिर अलग से चैप्टर भी है जहाँ डिटेल एक्सप्लेन करना है. सो चैप्टर नंबर 2 is a monetary management, monetary and financial sector. Monetary and financial sector. Monetary and financial sector. तो कुछ न्यू टॉपिक इनफैक्ट इस सर्वे के अंदर है इन दिस चैप्टर मेनली इन टर्म्स ऑफ द मॉनेटरी मैनेजमेंट के साथ जो मॉनेटरी टूल्स है और साइबर रिलेटेड, मतलब साइबर क्राइम के फॉर्म में भी अलग से इंफॉर्मेशन गिवन है, साइबर सिक्योरिटी के फॉर्म में भी अलग इंफॉर्मेशन गिवन है. अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ न्यू क्वेश्चन फ्रॉम दैट सेक्शन, द चैप्टर नंबर 2. देन थर्ड चैप्टर इज एक्सटर्नल सेक्टर. चैप्टर नंबर 3 एक्सटर्नल. So external sector will basically explain the composition and direction of the foreign trade, the recent composition and direction of the foreign trade, then trade policy in general, FDI. Chapter number 4 is price and inflation. Price and inflation. Chapter 5 is a medium term outlook. Medium term outlook. Chapter number 6 is a investment and infrastructure. Investment and infrastructure. Chapter number 7 is from again sector wise. It is industry, then services. Chapter number 8 services. चैप्टर नंबर 9 एग्रीकल्चर. तो सेक्टर वाइज डिवीजन ये चैप्टर 7, 8 और 9 है, इंडस्ट्री, सर्विस और एग्रीकल्चर. तो जो कंटेंट आपने एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में कर रखा है वहाँ पे सप्लीमेंट करना है कंटेंट, इंडस्ट्री वाले कार्ड में सप्लीमेंट करना है एज वेल एज फॉर द एग्रीकल्चर. और पर्पस एक्चुअली क्या होगा सर्वे का, दैट यू हैव टू टेक अ फ्यू इंपॉर्टेंट पैराग्राफ फ्रॉम दिस सर्वे फॉर योर इंट्रोडक्शन पार्ट or for the conclusion part. So few important paragraph basically you have to write. दो important purpose होगा सर्वे को रेफर करने का. One will be getting some objective information. So that objective information will be basically for the MCQ part. But you can use that information while you are explaining descriptive answer. So the main purpose of this lecture will be basically to cover the descriptive one. तो हमारा objective main ये होगा
डिस्क्रिप्टिव में कहाँ यूज करना है इकोनॉमी सर्वे के पार्ट को. सो बिकॉज द लॉट ऑफ डिटेल विल बी देयर, तो माइनर डिटेल को अगर आप इग्नोर करते हुए जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट होगा विल बी फोकसिंग बेसिकली ऑन दैट पार्ट. दैट मीन्स इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट की पैराग्राफ. देन चैप्टर नंबर 10 is climate and environment. Climate and environment. Chapter number 11 is social sector. Chapter number 11 social sector. Chapter number 12 employment. And last chapter is labor. Labor in the artificial intelligence era. Labor in the artificial intelligence period. ठीक है, तो 13 चैप्टर इन टोटल है. मेजर वन वी कैन से ऑब्वियसली द स्टेट ऑफ इकोनॉमी, बट सिंस वी आर रेफरिंग द एंटायर इकोनॉमिक सर्वे, तो माइनर जो की इंफॉर्मेशन होंगे विल राइट ओनली दैट. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विल बी द मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर. वन एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर भी इंफॉर्मेशन यू विल बी गेटिंग मैनी. देन इंडस्ट्री वाइज, सेक्टर वाइज रादर, इंडस्ट्री, सर्विसेज एंड एग्रीकल्चर. इंडस्ट्री, सर्विसेज एंड एग्रीकल्चर. बट कोई भी टॉपिक जो आपने ओवरऑल प्रिपेयर कर रखा है, लेटेस्ट से फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन का टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ इस सर्वे से यूज कर लेना. सिमिलरली लेबर के रिलेटेड अगर कुछ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अगर कोई न्यू टॉपिक है जो पहले किसी कंटेंट में एक्सप्लेन ही नहीं कर रखा आपने, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इम्प्लीकेशन है फॉर बैंकिंग सेक्टर और उसकी वजह से जो रिस्क एसोसिएटेड है वो काफी हाईलाइटेड है इन चैप्टर नंबर 2. तो दैट कैन बी आस्क्ड फॉर अ ग्रेटर वेटेज क्वेश्चन आल्सो सेपरेट. दैट विल बी अ न्यू क्वेश्चन. ठीक है, तो अब न्यू क्वेश्चन बेसिकली उससे रिलेटेड फॉर्म हो रहे. सो वील टेक अ स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद द स्टेट ऑफ इकोनॉमी, few important information, and then mainly we'll be discussing monetary and financial sector in this lecture. Main part will be this. ठीक है, तो सर्वे को बेसिकली आपको दो पर्पस के लिए स्टडी करना. वन विल बी योर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, सो वी हैव टू अपडेट द फैक्ट्स. जो रिसेंट रिकॉर्ड, मतलब जो भी टेबल आपने पहले अभी तक ड्रॉ कर रखा है फॉर ग्रोथ रिकॉर्ड, फॉर फिस्कल डेवलपमेंट, उसमें एक कॉलम और आपको ऐड कर लेना है फॉर द करंट डेटा. दैट विल बी योर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन. एंड देन सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो न्यू टॉपिक्स हैं, और यू कैन से सम इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ. ठीक है, तो वो आप अपने नोटबुक में आई विल डिक्टेट और उसको उसी फॉर्मेट में लिखेंगे. बट उस पैराग्राफ को इफ यू आर रीडिंग इट अगेन एंड अगेन, देन ओनली एक्सपेक्ट दैट यू कैन यूज दैट पैराग्राफ इन योर आंसर. आपको यूज करना वो पैराग्राफ. ये लैंग्वेज अगर आप यूज कर लो एक पेपर के अंदर, दैट विल बी बेटर, बिकॉज ये वेल क्राफ्टेड सेंटेंस होते हैं. अगर कोई इंक्लूड कर पाए उसे आंसर के फॉर्मेट में, तो प्रेजेंटेशन या इंप्रूवमेंट एटलीस्ट जो इनिशियल पैराग्राफ होगा उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है. ठीक है, ये नहीं कि आप डायरेक्टली कॉपी कर रहे हो, वो दे आर बेसिकली एक्सपेक्टिंग यू कि आप सेम लैंग्वेज यूज कर लो. ठीक है, सो स्टार्ट फर्स्ट विद द स्टेट ऑफ इकोनॉमी. स्टेट ऑफ इकोनॉमी वाले चैप्टर में इनिशियली ग्लोबल पर्सपेक्टिव हैज बीन गिवन कि इन विच कंटेक्स्ट वी आर अचीविंग दिस ग्रोथ. मतलब इंडियन ग्रोथ पे आएंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्लोबल ग्रोथ रेट अचीव्ड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज, बाय द इमर्जिंग डेवलपिंग कंट्रीज एंड द ओवरऑल ग्रोथ. In that context, we have to study the growth of the Indian economy. So the growth rate of Indian economy, that is GDP growth,
for financial year 2025, 6.4%. 6.4%. अब 6.4 में one division is sector wise. So sector wise, when we study the growth of the economy sector wise, that means how much is the contribution of agriculture sector. Because sector wise explain दो तरीके से growth explain होता है. One is that you can explain the growth from the sector wise, agriculture, industry और services का कितना contribution है. Second, you can study from the demand side. Demand side means you write equation as in macro y is equal to c plus I plus g plus x minus m. So this y is also GDP. The growth of GDP will be due to growth of consumption, growth of investment, growth of government expenditure, or growth of the net export. So this is basically from the demand side, and this is basically the sector wise supply side. So gross value added के लिए agriculture sector growth for this year is 3.8%. 3.8% agriculture sector growth. ठीक है, this is for 24-25 advanced estimate. Then industry. Industrial growth is 6.2%. 6.2. And service sector 7.2. 3.8, 6.2 and 7.2. ठीक है, clearly the share of different sector is different, so weighted average actually में apply हो रहा है. So 3.8 agriculture sector growth, 6.2 industrial sector and services sector, 7.2, and the overall GDP growth of 6.4. ठीक है. Now below that write on the global growth rate. This is for the Indian economy. The global economy on average, the global economy on average grew by 3.3%, grew by 3.3% in 2023. In 2023, as against IMF projection of 3.2% growth, 3.2% growth in the next 5 years. In the next 5 years. In the next 5 years. Next paragraph में private final consumption expenditure. Private final consumption expenditure. Private final consumption expenditure growth. Private final consumption expenditure growth was 7.3%. 7.3%. 7.3%. While gross fixed capital formation growth was 6.4%. 6.4%.
6.4%. तो 6.4% ग्रोथ है इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट का. ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट है. और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनफैक्ट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है और हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर है. दैट इज सी एंड जी. तो सी और जी का ग्रोथ एक्चुअल में 7.3% है. देन इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट ऑफ 6.4%. सो दिस इज फ्रॉम द डिमांड साइड, ये डिमांड साइड का ग्रोथ है. एंड द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट्स शेयर हैज इंक्रीज फ्रॉम 60.3% टू 61.8%. अगर आप जीडीपी का ब्रेकअप अगर कैलकुलेट करो कि ओवरऑल जो जीडीपी है, तो जीडीपी के इस कंपोनेंट में इन दिस पार्ट द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज कंजम्पशन एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, constitute about 61.8%. So the share has increased from 60.3 to 61.8. ये कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यू कैन सी, ये अलग से एक हाइलाइट्स के फॉर्मेट में भी अवेलेबल है. ठीक है, दिस इज फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी. फ्यू इंफॉर्मेशन इफ यू कैन राइट. वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए ऑलरेडी अब रिटर्न 23 में भी 3.3 है, 25 के लिए भी 3.3 है फॉर द वर्ल्ड ग्रोथ रेट. दिस इज फॉर द एडवांस इकोनॉमीज and that is emerging market developing economies. So the overall global growth rate after we can say the COVID period is stagnant about 3.2 3.3. तो rough information data का होना चाहिए कि how world economy is doing and how Indian economy is doing. So if it is doing better as compared to the world average, so it must be improving its rank. If the economy is doing, सो ऑब्वियसली द बेस मैटर्स. तो जो एडवांस इकोनॉमीज होंगे उनका बेस काफ़ी हायर है, तो उनका बेस अगर हायर हो गया तो ऑब्वियसली अगर 1.9% का भी ग्रोथ है तो इट इज दे आर एडिंग बेसिकली मोर टू देयर जीडीपी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर. बट इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज बेटर. तो यू कैन राइट फ्यू इंफॉर्मेशन. वर्ल्ड इकोनॉमी का लिख लिया. एडवांस इकोनॉमी ग्रोथ रेट रेंज सिर्फ लिख सकते हो अबाउट या करंट इंफॉर्मेशन 1.9%, and emerging market developing economies 4.2. So basically we have to see according to Indian economy has to be compared with that. We are not comparing Indian economy with the advanced economies. We are comparing Indian economy with the emerging market economies. But given the size of the economy and given the incidence of the poverty, we need a higher growth rate. We need a growth rate in the range of about 10% in order to deal with the problem of poverty and unemployment. So we need more growth. ठीक है, आपने टेबल डेटा इनफैक्ट लिख रखा है जीडीपी ग्रोथ रेट के लिए. एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बिकॉज मैटर करता है, ये पाई चार्ट मैटर नहीं करता. मतलब जो बार चार्ट बेसिकली है उसमें इन्फॉर्मेशन आपको रिलेट करने में डिफिकल्टी होगी कि एग्जैक्टली व्हाट इज द नंबर. तो यू हैव रिटन 6.4 फॉर द जीडीपी, दिस नंबर 6.4. ठीक है, एंड फॉर द एग्रीकल्चर, फॉर इंडस्ट्री एंड द सर्विसेज, एग्रीकल्चर के लिए 3.8, इंडस्ट्री के लिए 6.2 एंड सर्विसेज में 7.2. ठीक है. Another is basically this steady share of investment and composition in the GDP. Composition of GDP given है ये. Composition of GDP, you can just focus on this that last data. Financial year 25 के लिए या 24 के लिए. Gross fixed capital formation, then private final consumption expenditure, gross fixed capital formation, exports and imports.
ठीक है, इंपोर्ट हमेशा याद रखिएगा वो सबट्रैक्ट करके आएगा बेस से, जीरो माइनस में, बिकॉज जब आप जीडीपी कैलकुलेट करें देन इट इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. क्लियर? तो लार्जेस्ट कंपोनेंट इज व्हाट इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट? इंडियन इकोनॉमी इज सेड टू बी कंजम्पशन लेड इकोनॉमी. इट इज कंजम्पशन लेड इकोनॉमी. द रोल ऑफ private final consumption expenditure is largest and the share has increased from 60.3 to 61.8. You have mentioned that. So private final consumption expenditure is the largest component. So Indian economy is basically said to be a consumption led economy. It is not led by the export. Your dependency on net export is less and your dependency on the internal factor is more. So in that way it is a consumption led economy. Write on that part. Private final consumption expenditure. Private final consumption expenditure is the largest component. Is the largest component of aggregate demand. Is the largest component of aggregate demand and GDP. Largest component of aggregate demand and GDP, which means Indian economy is consumption led economy. Indian economy is consumption led economy. Indian economy is consumption led economy. Okay, and second important point will be this gross fixed capital formation. Layman language में से investment कहेंगे. Gross fixed capital formation, the second largest component. Below that, gross fixed capital formation. Gross fixed capital formation. Bracket में investment. Gross fixed capital formation is the second largest component of aggregate demand or GDP and it is about 30.1%. 30.1. तो इन द रेंज से याद रखोगे तो भी इनफ होगा. 23, 24, 25 अबाउट 30%. तो अप्रोक्सीमेटली लिखोगे चलता है. तो इट इज इन्वेस्टमेंट रेट इन द इकोनॉमी इज अबाउट 30%. इन्वेस्टमेंट रेट इकोनॉमी का अबाउट 30%. एंड व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द एक्सपोर्ट कंपोनेंट ऑफ एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी? Export is basically this yellow one, 21%. Import share is about 24%. So that means net export negative. ठीक है, that indicate basically current account deficit. Export का शेयर कम होगा, import का शेयर ज़्यादा होगा. That is why we have a current account deficit. Write that information. Export रेंज को याद रखिएगा. डेटा पढ़ने का सिंपल लॉजिक है. एग्जैक्ट ऑब्वियसली वो प्रीलिम्स के लिए तो एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 21.8 या 21.5 है. ठीक है, फॉर दैट. बट अदरवाइज जब आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख रहे हैं तो इफ यू आर राइटिंग जस्ट दैट द एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज जीडीपी इज अबाउट 20% और 20 to 22%. रेंज भी अगर लिखा है दैट विल बी ओके. एग्जैक्ट अगर नहीं आया तो नो प्रॉब्लम विद दैट. बट यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट रेंज. रेंज का आइडिया होना चाहिए कि वो 60 प्लस है और कौन 30 के अराउंड है और कौन 20 के अराउंड है. एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज अबाउट 21%. इज अबाउट 21%. while import as a percentage of GDP, import as a percentage of GDP is about 24%. Is about 24%.
Clear? Next information, capital expenditure improved continuously. Capital expenditure improved continuously from financial year 21 to financial year 25. From financial year 21 to financial year 25, that is after COVID period. Post general election, capex, that is capital expenditure, capex increased by 8.2% during July to November 2024. Next information, geopolitical tension, ongoing conflict, and global trade policy risk continue to pose significant challenge to the global economic outlook. So the geopolitical tension, that means Russia-Ukraine war and the crisis, plus the trade policy of the developed countries particularly, और recent date में after the election in the US, तो जो retaliatory policies होंगी, that will be basically creating a challenge. So we have to consider the growth in that perspective. So chapter number 1 is basically giving you the overview of that. The banking sector and the further detail we will be covering in this next part, which is monetary and financial. So we have to cover now sector wise in detail. So ठीक है, सिंस आपको चैप्टर वाइज सेपरेटली डिटेल में करना है, इसलिए स्टेट ऑफ इकोनॉमी के लिए जो रेलिवेंट था, दिस नाउ चैप्टर नंबर 2 विच इज मेन. Monetary and financial sector. Monetary and financial sector. So whenever you use the term financial sector, basically it includes the banking. What else? Financial sector word use कर रहे हैं. So financial sector will include what? One is the banking, इंश्योरेंस एंड द कैपिटल मार्केट. तो कैपिटल मार्केट के अंदर बाकी सारे मार्केट आ जाएंगे. तो ब्रॉडली तैयार किए 3 पार्ट आ जाएगा. दैट इज वन विल बी योर बैंकिंग सेक्टर, द इंश्योरेंस सेक्टर एंड द कैपिटल मार्केट. सो वी विल बी स्टडिंग बेसिकली द डेवलपमेंट्स इन द बैंकिंग सेक्टर, इन द इंश्योरेंस सेक्टर एज वेल एज इन द कैपिटल मार्केट. एंड along with that we start first of all with the monetary part. So basically this chapter is money and banking. मनी का कंटेंट भी है, बैंकिंग का कंटेंट भी होगा, कैपिटल मार्केट का कंटेंट होगा एंड द इंश्योरेंस सेक्टर कंटेंट. क्लियर? सो नाउ यू आर बेसिकली राइटिंग सम इंपॉर्टेंट की पैराग्राफ फ्रॉम दिस चैप्टर. राइट ऑन फर्स्ट. ऐसे आप 2 तरीके से यार के लिखेंगे. एक तो इंपॉर्टेंट वी कैन से paragraph from this chapter, and then we will go with the topic wise as well.
उसे आप किसी भी जगह अप्लाई करो, यूज करो, ठीक है। लाइक द फर्स्ट वन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस play a pivotal role in financial institutions play a pivotal or important role in shaping a country's economic growth. Financial institutions play a pivotal role in shaping a country's economic growth trajectory. Financial institutions play a pivotal role in shaping a country's economic growth trajectory by facilitating savings, investment and credit for economic activities. I repeat, financial institutions play a pivotal role in shaping a country's economic growth trajectory by facilitating savings, investment and credit for economic growth. You can use this line for any answer. बैंकिंग का क्वेश्चन आ रहा है तो भी यूज कर सकते हैं, कैपिटल मार्केट का क्वेश्चन आ रहा है तो भी यूज कर सकते हैं. दे आर बेस्ड any financial institutions basically play a pivotal role in shaping a country's economic growth trajectory by facilitating savings, investment and credit for the economic activities. The prevailing monetary policies influence the interplay between financial intermediation and economic growth. Financial intermediation and economic growth. Underline that. The prevailing monetary policies influence the interplay between financial intermediation and economic growth. What is financial intermediation? Banks are financial intermediaries. They are intermediate between what? जो सेवर है और जो इन्वेस्टर है उनके बीच इंटरमीडिएट है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको मॉनेटरी पॉलिसी विल इन्फ्लुएंस दैट फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन बाय चेंजिंग द सीआरआर, बाय चेंजिंग द एसएलआर. दे आर बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग द ट्रांसफर. सो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी इज गाइडेड टू इन्फ्लुएंस द फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ. तो दैट टाइप ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज आंसर में यूज होने. The current monetary policy and development in monetary policies are shaped by evolving domestic and global factors, including inflation trend, economic activity projection, and interest rate movement,
in major economies, interest rate movement in major economies like US, European Union and Japan. Interest rate movement in major economies like US, European Union and Japan. मतलब ओवरऑल जो मॉनेटरी पॉलिसी गाइड होगा दैट विल बी गाइडेड बाय द इन्फ्लेशन ट्रेंड, economic activity projection. That means if you are projecting a higher growth rate, you need to have more money in the economy also. And the monetary policy is also guided by the interest rate in the prevailing in the major economies. Like अगर फेडरल रिजर्व ने रेट को इंक्रीज किया है तो अगर वो वहाँ इंक्रीज होगा तो नेचुरली देयर विल बी आउटफ्लो ऑफ कैपिटल. तो हाउ यू कैन कंट्रोल दैट? You can control by raising the domestic interest rate here also. So your monetary policy is also guided by the monetary policy adopted by the major economies. So we are guided by that major monetary policy of other countries, and you are also guided by the domestic consideration. That is how much will be the inflation trend and so on. So this is an important key paragraph वो upfront introduction वाले part में given है. Then some basic informations about the monetary aggregates, monetary developments. So that can be used for introduction for any question. Monetary policy का question अगर आएगा तो भी वहाँ पे आप उसको use कर सकते हैं. Then what are the different monetary developments? Right on. The primary objective of monetary policy. The primary objective of monetary policy is to maintain price stability. The primary objective of monetary policy is to maintain price stability. Is to maintain price stability while also considering the goal of economic growth. While also considering the goal of economic growth. After comma, as stable prices are essential. As stable prices are essential for sustainable growth. Stable prices are essential for sustainable growth. So in one liner, what is the objective of monetary policy? In single sentence, you can say the objective of monetary policy is to have growth with price stability. So we want economic growth with stability of price. And to keep price stable, you have to keep money stable. ठीक है, प्राइस को स्टेबल रखने के लिए मनी को स्टेबल रखना है. टेक्निकल फॉर्मेट दैट मीन्स यू इस तरीके के इक्वेशन से आप फेमिलियर हो. मनी सप्लाई इनटू वेलोसिटी इक्वल टू प्राइस इनटू आउटपुट. तो एम का ग्रोथ अगर इसे परसेंटेज ग्रोथ के फॉर्मेट में लिखते हैं तो दिस इज ग्रोथ रेट ऑफ मनी सप्लाई. बेसिकली यू व्हेन यू टेक इट द ग्रोथ रेट यू टेक लॉग. तो जहां जब मल्टीप्लीकेशन वहां साइन प्लस आ गया. वेलोसिटी को अगर कांस्टेंट मानते हैं तो उसका ग्रोथ रेट 0 हो गया. प्राइस का ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन है और आउटपुट का ग्रोथ रेट जीडीपी का ग्रोथ रेट हो गया. तो बेसिकली व्हेन वी एक्सप्लेन द इन्फ्लेशन रेट देन इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू व्हाट? इन्फ्लेशन रेट इज मनी ग्रोथ रेट माइनस जीडीपी ग्रोथ रेट. So how we can keep inflation constant? Suppose money growth rate is, you want to keep inflation constant at 3%. Inflation targeting है कि rate of inflation 3% होना चाहिए. तो 3% inflation rate को constant रखने के लिए money का growth कितना होना चाहिए? वो depend करेगा economy के growth के ऊपर. If you are projecting a growth rate of GDP of 6.4%, तो फिर money growth rate has to be 9.4%, then only we can have an inflation growth rate target of 3%. So the inflation targeting also depend upon the growth rate. You can achieve that targeting only when we have a certain amount of money growth rate. But how much will be the money growth rate? That depends upon what is the growth projection.
ग्रोथ प्रोजेक्शन हायर हो गया तो ग्रोथ प्रोजेक्शन अगर हायर हो गया तो नेचुरली मनी ग्रोथ भी हायर करेंगे, ओनली देन यू कैन मीट दैट इन्फ्लेशन टारगेटिंग. सो द ग्रोथ ऑफ मनी डिपेंड अपॉन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी. अगर मनी का ग्रोथ नहीं हो रहा है इसका मतलब जीडीपी का ग्रोथ भी नहीं है. तो इफ इकोनॉमी प्रोड्यूसेस मोर देन टू बाय दैट मोर क्वांटिटी वी नीड मोर मनी. So we need more money in the economy. Money supply is not constant. Money supply का growth rate constant हो सकता है, but the money supply does not remain constant. तो यहाँ पे आप जब लिख रहे हैं तो टेक्निकल फॉर्मेट में यूज नहीं करना, बट बैक एंड में आपको मालूम हो कि दिस इज बेसिकली द बैकग्राउंड. नेक्स्ट, the RBI employs or uses the RBI employs various policy instrument like open market operation, CRR, SLR, etc. to achieve stability of price. अब यहाँ पे कुछ recent information आपने लिखा है, general information, so that part can be used for any monetary policy answer. Now objective के लिए next paragraph में, during the first 9 month of during the first 9 month of financial year 25, first 9 month of financial year 25 means April to December 24. During the first 9 month of financial year 25, the Monetary Policy Committee MPC, the Monetary Policy Committee of RBI, Monetary Policy Committee of RBI, in its various meetings, Monetary Policy Committee of RBI in its various meetings decided to keep the policy repo rate, unchanged at 6.5%. 6.5%. Repo rate is the rate at which central bank is lending money to the commercial bank, and reverse is basically the other way. So until its August 2024 meeting, the committee retained its stance. Committee retained its stance on withdrawal of accommodation. Underline that term. Withdrawal of accommodation. To ensure that inflation target is achieved. But considering the prevailing and expected inflation, inflation growth dynamics, RBI has decided, or MPC has decided,
Monetary Policy Committee. MPC has decided to change the policy stance. To change the policy stance from withdrawal of accommodation to neutral. Withdrawal of accommodation to neutral. ठीक है, October 24 onwards basically the central MPC stance is basically has been changed from withdrawal of accommodation to neutral. In December 2024, MPC announced a cut in CRR to 4% from 4.5%. 4% from 4.5%. ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव के लिए इंफॉर्मेशन रखिएगा, विड्रॉल ऑफ स्टांस फ्रॉम एमपीसी की जो पॉलिसी है उसमें विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन टू न्यूट्रल. तो करंट स्टांस इज बेसिकली न्यूट्रल. अदर इज अबाउट द मनी मल्टीप्लायर. तो थियोरी के फॉर्म में आपको मनी मल्टीप्लायर मालूम है, बट व्हाट इज द नंबर इन इंडियन इकोनॉमी. अगर RBI will create certain amount of money which is referred basically here as the M0, then how much will be the M3 broad money. RBI जो मनी क्रिएट करेगी वो बेस मनी हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द हाई पावर्ड मनी. तो बेस्ड अपॉन दैट हाई पावर्ड मनी जो ओवरऑल मनी सप्लाई इकोनॉमी में क्रिएट होगा, दैट इज द ब्रॉडर मेजर ऑफ द मनी इन द इकोनॉमी इज M3. हाउ मच विल बी दैट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर. तो मनी मल्टीप्लायर इज बेसिकली 5.6. ठीक है, दिसंबर 2024 तक का इंफॉर्मेशन है. मनी मल्टीप्लायर is 5.6. 5.6 actually means what? If RBI will create 100, money supply in the economy will be 560. 5.6 times. It is a ratio of M3 upon M0. ये एक्चुअल में M3 upon M0 का रेशियो है. ठीक है ना, इट इज गिविंग सम मोर इन्फॉर्मेशन. ऑब्वियसली वो आपको थियोरेटिकल फॉर्मेट में मालूम है. मल्टीप्लायर की वैल्यू एक्चुअल में डिपेंड किस पे करती है. मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस में जो कर रखा है उसमें मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू वो डेरिवेशन भी कर रखा है. मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू व्हाट? 1 plus C by C plus R. What was C and what was R? C was the currency deposit ratio. How much people will keep in the form of currency and how much they will deposit in the bank. And what was R? Reserve deposit ratio. How much bank will maintain as a reserve. So basically the multiplier value depend upon currency deposit ratio which reflect the behavior of public, and reserve deposit ratio which reflect the behavior of banks. तो उसी पॉइंट को बेसिकली यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है नेक्स्ट पार्ट में. A country's money multiplier is influenced by two main factors. A country's money multiplier is influenced by two main factors. Number one, the amount of cash individuals या business hold. Amount of cash individuals hold, and second, reserves that banks maintain. Reserves that bank maintain. तो मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी स्मॉल सी पे और स्मॉल आर पे.
and small c was currency deposit ratio, small r is reserve deposit ratio. और exact इसका term आता है 1 plus c by c plus r, that is the value of money multiplier. When individuals keep more cash, when individuals keep more cash, when individuals keep more cash, then banking system cannot create money. When individuals keep more cash, then banking system cannot create money, resulting in a lower multiplier, resulting in a lower multiplier, resulting in a lower multiplier. In this case, cash in hand act as a leakage. Cash in hand act as a leakage from banking system, act as a leakage from banking system. बैंक के पास अगर जाएगा then bank will multiply, but if people are holding, it is not received by the bank, तो बैंक की क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी कम हो जाती है. Similarly, the reserves that bank hold, with central bank, reserves that bank hold with central bank also count as a leakage, and thereby reduces money multiplier, ठीक. तो ऑब्जेक्टिव में रखिए मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू इनफैक्ट 5.6 है, एंड इट डिपेंड अपॉन टू थिंग्स. वन, कैश रिजर्व रेशियो, cash deposit ratio held by the public, and reserve deposit ratio held by the banks. Now explain for financial intermediation. Financial intermediation. I don't keep paragraph now. Financial intermediaries, इसमें मेनली बैंक आ जाएगा. Financial intermediaries are critical in implementing and transmitting monetary policy actions. So policy rates like repo and other policy rates set by MPC, are transmitted to the real economy, through financial intermediaries, adjusting their lending and deposit rate,
lending and deposit rate. So whenever you change the policy rate, bank also adjusts their lending and deposit rate. Similarly, the CRR and SLR requirement. Similarly, the CRR and SLR requirement. CRR and SLR requirement influence the lending capacity. Influence the lending capacity of financial intermediaries. Financial intermediaries. All these policy rates or ratios, all these policy rates or ratios have an impact on economic growth. Have an impact on economic growth. Have an impact on economic growth, price level and financial stability of economy. Financial stability of economy. Financial stability of economy. तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का रोल भी अगर आप एक्सप्लेन करें किसी पर्टिकुलर पॉइंट में, यू कैन यूज दैट पार्ट. नाउ सम factual informations about banking sector first. The gross NPA, GNPA. The GNPA ratio of scheduled commercial bank. Scheduled commercial bank, you can write SCB. GNPA ratio of scheduled commercial bank has declined continuously. From its peak in financial year 18. From its peak in financial year 18 to a 12-year low of 2.6% in September 2024. So some lower slippage, and reduction in outstanding. Lower slippage and reduction in outstanding through recoveries, upgradation, and write-off. Through recoveries, upgradation and write-off have led to this decrease. As a result, there is improvement in asset quality. There is improvement in asset quality of all major banks. Improvement in asset quality of all major banks. Next paragraph. The restructured standard advance. RSA. The restructured standard advance ratio
restructured standard advance ratio, which is share of restructured standard advance RSA in total gross loan and advance. For scheduled commercial bank SCB, declined from 1.8% in March 2022, 1.8% in March 2022 to 0.7% in September 2024. Full stop. All major bank groups reported a decrease in this ratio. All major bank groups reported a decrease in this ratio. The CRAR, what is CRAR? Capital risk weighted asset ratio. Of scheduled commercial bank stood at 16.7% in September 2024. ठीक है ना. जो ओवरऑल बैंक का क्रेडिट है, फॉर दैट एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज गिवन दैट व्हेन वी टेक द रेशियो ऑफ क्रेडिट टू द जीडीपी, रेशियो, तो अगर इफ दैट क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो इज हायर इट मीन्स growth of the credit is more and the growth of the GDP is, so you have lended more actually. So it can go above the average and sometimes it can be below the average. So how does the movement in the credit to GDP ratio is an indicator of the economic performance. So obviously for better economic performance we need more and more credit, but credit का भी अपना एक साइकिल है. जैसे इकोनॉमी का साइकिल होगा वैसे क्रेडिट का भी एक साइकिल होगा. So sometimes it will be above the long run trend and sometimes it will be below the long run trend. So write for that part. Next, the credit GDP ratio. ठीक है, जहाँ जो प्योर फैक्ट वाले इंफॉर्मेशन को इग्नोर करते हुए जो कोर पॉइंट्स है वो आप लिख रहे हैं, बिकॉज अबाउट 35-40 पेज का चैप्टर है. द क्रेडिट जीडीपी रेशियो इज a good statistics. The credit GDP ratio is a good statistics to evaluate where an economy stands. To evaluate where an economy stands in the financial cycle. So if the ratio is significantly greater,
than its trend value. If the ratio is significantly greater than its trend value, then it may indicate a buildup of stress. It may indicate a buildup of stress in the lending sector. Buildup of stress in the lending sector. Buildup of stress in the lending sector. Underline that. If the ratio is significantly greater than its trend value, it may indicate a buildup of stress in the lending sector. On the other hand, if the ratio is lower, compared to its trend, if the ratio is lower compared to its trend, then it indicates scope for economic growth. Scope for economic growth. So if it is lower than the trend, that means you are giving less credit. You have given less credit. So by giving more of credit, there we can promote growth. And if it is already above the long run trend, then it is basically indicating the stress on the lending sector. In the case of India, there was a positive credit GDP gap. There was a positive credit GDP gap. Positive credit GDP gap means जो क्रेडिट जीडीपी का रेशियो है वो ट्रेंड से ज़्यादा है. There was a positive credit GDP gap between 2006 and 2012. 2006 and 2012. Indicating excessive credit growth. Indicating excessive economic growth. तो नेचुरली वो पीरियड होगा बूम पीरियड के लिए. With credit there will be more of growth. This also coincided with investment boom. This also coincided with investment boom over that period. Investment boom over that period. A burst followed, so boom and burst. A burst followed this in the credit cycle. So after 2012 we can say the burst followed. So 6 to 12 was basically the boom period. A burst followed this in the credit cycle, and the higher NPA impaired banking sector's lending ability. Leading to significant slowdown in credit growth. Yes, so you can use this information when you are writing for the banking sector development or the poor quality of the banking sector. वैसे related कई सारे question है. The asset quality of the bank has deteriorated during the 2006 to 2012 period. So you can use this type of additional information of credit GDP ratio to substantiate that answer.
रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब ये कुछ नई इंफॉर्मेशन है जो करंट सर्वे के अंदर है। इट इज नॉट दैट इन एवरी सर्वे विल बी गेटिंग द सेम इंफॉर्मेशन ऑल। तो अब वेरी इलेबोरेटेड चैप्टर बेसिकली दिस इज रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। Obviously, this rural finance institution will basically consist of what? What are the rural finance institutions? Rural finance institutions will be regional rural bank, ठीक है, जो cooperative societies हो जाएंगे, state cooperative boards, even NBFC, microfinance institutions, microfinance institutions, and local area bank, local area bank. ठीक है, नाबार्ड वगैरह वो एपेक्स इंस्टीट्यूशन हो जाएगा फॉर रेगुलेटरी। That in first paragraph. Rural financial institutions are vital in ensuring inclusive growth, are vital in ensuring inclusive growth through financial inclusion, comma credit accessibility, comma agricultural financing, and empowerment of rural entrepreneurs. Underline that. Rural financial institutions are vital in ensuring inclusive growth through financial inclusion, credit accessibility, agricultural financing, and empowerment of rural entrepreneurs. These institutions comprise a network of organizations that provide banking and financial services in rural areas. So this multi-agency system include RFI is multi-agency system. This multi-agency system include RRB, Regional Rural Bank, comma Rural Cooperative Bank, RCB, Rural Cooperative Bank, comma SCB, State Cooperative Bank, NBFC, comma microfinance institutions, and local area bank.
and local area bank. Local area bank. The system supports rural India. The system supports rural India. The system supports rural India through a network of banking outlet. The system supports rural India through a network of banking outlet which includes branches and banking correspondents. Which includes branches and banking correspondents. Full stop. NABARD oversee the performance and oversees. NABARD is National Bank for Agriculture and Rural Development. So NABARD oversee the performance and health of a regional rural bank and a rural cooperative bank. Focusing on aspects such as growth, composition of assets and liability, business structure and profitability indicators. Okay, next paragraph basically gives you the history about the RRB. That it was set up in 1975. Initially the number of branches were only 5, expanded to 113 in 133 in 2006. This much amount of government has approved 10,890 crore in recapitalization assistance of the RBI during the financial year 22-23. वो factual information है आपके लिए ज़्यादा relevant part होगा. What is the meaning of that and what will be the overall objective? That means how they will promote the economic growth, and they are basically taking care of the rural finance. So rural finance institutions are basically for that purpose. एक एरिया आपका रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, और सेकंड इंपॉर्टेंट एक तो जैसे बैंक के थ्रू बेसिकली यू गेट द शॉर्ट टर्म लोन. फॉर द लॉन्ग टर्म लोन पर्पस बेसिकली डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर देयर. So what is the development finance institution? Those who give loan for the long term purpose, like developmental banks. What are the developmental banks? ये तो commercial bank है. Commercial banks are different, developmental banks are different. Commercial banks are basically accepting the deposit from public and giving loan to the public for the short term and medium term loan. Development banks were not receiving deposit from the public, and they were giving loan for the long term purpose, like IDBI, UTI. अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ डेवलपमेंटल बैंक का जो नेचर है वो कॉमर्शियल बैंक का नेचर हो गया, एंड सम हैज स्टिल रिटेनिंग देयर डेवलपमेंटल बैंक कैरेक्टरिस्टिक्स.
So survey is basically highlighting that part as well. Development financial institutions, DFI. Development financial institutions. ठीक है, IFCI है, ICICI है, IDBI है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे बैंक का नेचर चेंज हो चुका है. दे आर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, बट वो बहुत पुरानी बात नहीं है. इट इज द रीसेंट फेनोमेनन दैट दे हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक लाइक ICICI और UTI. Development financial institutions. Development financial institutions are key players in supporting economic progress. Development financial institutions are key players in supporting economic progress. The main objective is to boost economic expansion. The main objective is to boost economic expansion through funding infrastructure developments. Underline the main objective. The main objective is to boost economic expansion through funding infrastructure development. So they are basically funding the infrastructure development. These institutions offer extended financial and technical aid. These institutions offer extended financial and technical aid across different sectors. So they supply technical assistance. Including reports on project. Studies on their feasibility. And advisory service. That means they are not simply giving you the loan. They also play the role of advisory. जिस प्रोजेक्ट में मनी लगा रहे हैं वो प्रोजेक्ट feasible है या नहीं है, and you will be provided advising information about the feasibility of the project. So it is not just a money lending. It is basically the role of developing the economy by including access to credit, by improving access to credit, for infrastructure and housing project. After comma, DFIs encourage more loans to be directed towards these critical areas.
So DFIs play a vital role. DFIs play a vital role in India. DFIs plays a vital role in India by providing long-term funding. By providing long-term funding for key sectors. Long-term funding for key sectors. By providing long-term funding for key sectors, after comma, supporting economic growth, promoting industrial expansion, improving infrastructure, and helping develop small and medium sized business, Underline that last sentence. DFIs plays a vital role in India by providing long-term funding for key sectors, supporting economic growth, promoting industrial expansion, improving infrastructure, and helping develop a small and medium-sized business. ठीक है, तो स्टार्ट के जो DFIs थे बेसिकली अगेन इंफॉर्मेशन इज वन इज IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देन ICICI, IDBI, ये जितने भी एग्जांपल दिए जा रहे हैं ये 1950s और 60s के बैंक्स हैं. सो IFCI, ICICI, IDBI. But over a period of time क्या हो गया, they have become basically the universal bank. They have converted into the commercial banks. So they are accepting deposit from the public and they are lending for short term purpose also. So the nature of those developmental bank has turned into the commercial bank nature. So recently some new developmental banks have been established. Next problem. Over time, these DFIs, that is these three, these DFIs became universal bank or commercial bank. These DFIs became universal bank or commercial bank. So as two major DFIs converted into commercial bank, as two major DFIs converted into commercial bank, as two major DFIs converted into commercial bank, there were fewer institutions, there were fewer or less institutions to address the macro needs, of industrial and infrastructure development. So some institutions such as
Institutions such as IDFC is Infrastructure Development Finance Company. IDFC अब शॉर्ट में लिखते हैं. IDFC was set up in 1997. ये स्टार्ट में जो लिख रखा है वो 50-60s के बैंक से. That IFCI, ICICI और IDBI. Institutions such as IDFC, IIFCL, that is India Infrastructure Finance Company Limited. IIFCL 2006. And more recently, National Bank for Financing and Infrastructure Development. National Bank for Financing and Infrastructure Development. National Bank for Financing and Infrastructure Development. National Board for Financing and Infrastructure Development. This is in 2021. Short में NABFID. National Bank for Financing and Infrastructure Development. Have focused on funding infrastructure development. Have focused on funding infrastructure development. Funding infrastructure development. Also, IIFCL has supported India's infrastructure development. IIFCL has supported India's infrastructure development over the past 18 years. Full stop. As a long-term financing institution, it is amongst the most diversified. Public sector infrastructure lender. Most diversified public sector infrastructure lender. Next paragraph. Given the need for long-term capital provider. With a holistic sectoral mandate. Given the need for a long-term capital provider with a holistic sectoral mandate. The NABFID was established as an infrastructure focused DFI. Through NABFID Act 2021. Through
NABFID Act 2021. So created by Parliament. NABFID Act 2021. The RBI accorded it or given. The RBI accorded it an All India Financial Institution status. RBI accorded it an All India Financial Institution status. All India Financial Institution status in March 2022. March 2022. And thereby making it the fifth All India Financial Institution, making it the fifth All India Financial Institution, fifth All India Financial Institution. Other four? All India Financial Institution status. One is NABARD, National Housing Bank, Exim Bank, अलग अलग एरियाज के लिए सारे. NABARD for the agriculture, rural development. So making it the fifth All India Financial Institution status. After, you can write all, after NABARD, SIDBI for Small Industrial Development Bank of India, National Housing Bank NHB, and Exim Bank. ठीक है, तो ऑलरेडी ये फोर्थ है, इस फोर्थ में आप ऐड फिफ्थ को कर रहे हैं. फिफ्थ एडेड इज NABFID. So some detail is there in this survey. Usually क्वेश्चन वगैरह सेट होते समय इसका ध्यान रखा जाता है कि कौन से इंफॉर्मेशन सर्वे वगैरह में हाईलाइट हो रहे हैं. तो हाईलाइटेड इंफॉर्मेशन अबाउट द रूरल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का भी हाईलाइटेड है और डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए भी हाईलाइटेड है. Artificial intelligence by bank. ठीक है, use of artificial intelligence and रेड. ठीक है, अब इसमें इसका इंपॉर्टेंस भी एक्सप्लेन करना है और इसकी वजह से जो रिस्क जनरेट हो रहा है वो भी एक्सप्लेन करना है. दैट इज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव पार्ट. Done here. Over the past several decades, banks have consistently adapted. Banks has consistently adapted. Over the past several decades, banks have consistently adapted the latest technology, adapted the latest technological innovation to redefine customer interaction. Over the past several decades, banks have consistently adapted the latest technological innovation to redefine customer interaction.
Globally, banks introduced ATM. Globally, banks introduced ATM in 1960s. Banks introduced ATM in 1960s and electronic card-based payment. Electronic card-based payment in 1970s. Card-based payment in 1970s. Since 2000, we see widespread adoption of 24/7 online banking. 24/7 online banking, followed by a rise of mobile banking. Since 2010. तो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इवॉल्व जैसे से होती है, न्यू इंस्ट्रूमेंट्स आते जाएंगे. एटीएम इन 1960s, देन electronic card based payment in 70s. Since 2000 it is basically the 24/7 banking system, and the mobile system is basically banking is basically the phenomenon of the last decade. So उस कंटेक्स्ट में बेसिकली अब आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन करना है. सो नेक्स्ट पे आप. Now the world is in artificial intelligence powered digital age. Now the world is in AI powered digital age. AI powered digital age. After comma, driven by decreasing data storage, and processing cost. After comma, greater accessibility and connectivity. Underline that. Artificial intelligence powered digital age, driven by decreasing data storage and processing cost, greater accessibility and connectivity. These innovations can lead to higher automation and often enhance human decision making speed. Enhance human decision making speed and accuracy. When correctly managed to mitigate risk. Underline this as well. These innovations can lead to higher automation and often enhance human decision making speed and accuracy when correctly managed to mitigate risk. Next paragraph. The use cases of AI and machine learning (ML).
The use cases of AI and machine learning applications. Machine learning applications by banks in India. By banks in India range across areas such as range across areas such as range across areas such as credit underwriting, regulatory capital planning, underline करते जाना points, credit underwriting, regulatory capital planning, liquidity management, fraud detection and prevention, risk assessment and management, again portfolio optimization, pricing models, etc. Yes, underline all. Credit underwriting, regulatory capital planning, liquidity management, fraud detection and prevention, risk assessment and management, portfolio optimization, pricing models. Obviously एक दोबारा अगर आप लिखोगे नहीं तो ये सारे वर्ड्स पेपर में नहीं आते. You have to learn basically these technical terms in which area AI will be helping the banks. Next part. The next paragraph. The rapid pace of technological evolution in India. The rapid pace of technological evolution in India. एक्चुअली ये एआई और मशीन लर्निंग का कंटेंट आरबीआई डीपीआर के सिलेबस में अलग से मेंशन भी है. नॉट फॉर द इकोनॉमिक सर्विस बिकॉज इकोनॉमिक सर्विस वाले सिलेबस रिवाइज नहीं करते कभी. वो जैसे लिखा हुआ था पहले वैसे ही रहता है. क्वेश्चन आ जाएगा बट सिलेबस में चेंज नहीं करेंगे. आरबीआई का सिलेबस रिसेंटली डिफाइंड हुआ है प्रॉपरली, तो दे हैव एडेड दैट एआई एंड मशीन लर्निंग. तो बैंकिंग सेक्टर का एप्लीकेशन है तो उसके थियोरेटिकल क्वेश्चन के फॉर्मेट में हो रहेगा एंड हाईलाइटेड एंड एक्सप्लेन वेल इन दिस सर्वे. The rapid pace of technological innovation in India, particularly in areas like the rapid pace of technological evolution in India, particularly in areas like AI, blockchain and data analytics has created new opportunities to reimagine traditional financial service and process. Traditional financial services and processes. Full stop. AI and large language models, LLM. AI and large language models have enhanced
customer service, have enhanced customer service through interactive chatbots, and personalized experience after comma while blockchain offers secure, transparent and efficient transaction. Full stop. Moreover, evolving consumer behavior and expectation driven by a rise of digital natives and increasing demand for personalized seamless and convenient underline three words: personalized, seamless and convenient financial solution. Encourage established companies and newcomers to innovate to remain competitive. ये पार्ट बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ द एआई एंड द एमएल इन दिस बैंकिंग सिस्टम, बट द सेम रोल ऑफ द एआई इज आल्सो क्रिएटिंग सम problems or the risk. So you have to be careful when we are implementing or using this AI or ML in the banking system. So other part is basically the risk associated with the use of that technology. What is the associated risk? Next part mein. Along with the benefits, using AI in banking system has few risks. Along with the benefits, using AI in banking system has few risks. So the black box nature of AI system. Black box nature of AI system can make it difficult. Black box nature of AI system can make it difficult to access, or rather to assess the system's reliability. To assess the system's reliability
or contest its decisions. System's reliability or contest its decisions. This lack of transparency can lead to trust concern and challenges. Trust concern and challenges in validating the fairness and accuracy of AI decisions. After comma, making it challenging to audit. Making it challenging to audit or interpret the algorithms that drive the decision. So accountability risk include difficulty in tracing decisions. Difficulty in tracing decision to their source and establishing liability. I repeat, accountability risk include difficulty in tracing decisions to their source and establishing liability. Other risk include those related to a human resource such as inadequate human oversight, comma, over reliance on AI, and loss of human expertise. So one is the concern related to the human resource. What will be the use of the human resource if everything will be done by the AI? Second is cyber risk. Third, malicious uses like synthetic identity frauds, and market manipulation.
Fourth, system related risk such as inability to intervene, and market correlation, and fifth, third party dependencies and service provider concentration. AI में भी वो सर्विस प्रोवाइडर कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है. दैट मीन्स ओनली फ्यू AI is basically operating all over the world, so you are dependent upon the third party. तो indigenous जो control होगा, that so there are certain risks associated with that AI, but OECD has basically laid down certain guidelines for the use of AI in the banking system. Banking system में use करते समय what you should be taking care of. So that point, just add that. International bodies like OECD, have outlined core principles governing the use of AI, which include inclusive growth, comma, a respect for rule of law, comma, transparency and explainability, comma, robustness and safety, explainability, and accountability. Underline those points. Inclusive growth, respect for rule of law, transparency and explainability, robustness and safety, and accountability. The Hiroshima AI Process Comprehension Policy Framework. The Hiroshima AI Process Comprehensive Policy Framework. The Hiroshima AI Process Comprehensive Policy Framework. Underline that. Hiroshima AI Process Comprehensive Policy Framework. Established in December 2023. Includes a set of guiding principle, and a code of conduct. After comma, marking a significant step towards
marking a significant step towards a coordinated global approach for the responsible development of AI. So some different techniques are being adopted by regulators across the globe, and most of which are focused on principles based guidance. Establishing robust AI governance. Is the first and crucial step. Establishing robust AI governance is the first and crucial step in addressing the challenges that come with implementation of AI system. So without an appropriate governance framework, AI system may operate without clear guidelines, leading to potential abuse or misuse of technology. As vulnerability could evolve with the pace of innovation, and degree of AI integration in financial services, after comma, regulatory and supervisory effectiveness. May take a back seat if
financial regulators, if financial regulators AI related skills and knowledge, financial regulators AI related skill and knowledge, AI related skill and knowledge do not keep pace with development in this space, in that context RBI has announced the establishment of committee to create a framework for a responsible and ethical enablement of artificial intelligence in financial sector. Create a framework for responsible and ethical enablement of artificial intelligence in financial sector. Just underline that. Free AI. Framework for responsible and ethical enablement. Framework for responsible and ethical enablement of AI. ठीक है, तो ये न्यू क्वेश्चन के फॉर्म में ये क्वेश्चन आप किसी भी कैटेगरी में एक्सपेक्ट कर सकते हो. बैंकिंग सेक्टर के लिए दैट मीन्स इट कैन कम एज अ पार्ट ऑफ योर जनरल स्टडीज पेपर. मतलब ऑप्शन में जीएस में वी कैन से जीएस 3 के पार्ट में क्वेश्चन आ सकता है, या इकोनॉमिक सर्विस में जो जीएस का पेपर स्टार्ट में वहाँ भी है इकोनॉमी के क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन लिखते हैं आप. तो रोल ऑफ द एआई इन दी बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल सेक्टर एंड ऑल्सो इन दी इंडियन इकोनॉमी पेपर. तो मेनली भी अब रिमेंबर ये फाइनेंशियल सेक्टर, ये चैप्टर इनफैक्ट इस करंट सर्वे के अंदर काफ़ी एक्सपेंडेड है. करंट सर्वे में काफ़ी एक्सपेंडेड चैप्टर पढ़ रही है, बिकॉज इस चैप्टर में कंप्लीट मॉनेटरी और फाइनेंशियल सेक्टर है. तो जो न्यू टॉपिक है, आई एम बेसिकली इंक्लूडिंग दैट टॉपिक, जो कोर पार्ट है, जो रिपीटेडली बार बार आते हैं, जो आपने कर रखा भी है, वी मे इग्नोर दैट. But one more part is basically very explained well is the cyber security aspect of the India's financial sector. The cyber security aspect of the India's financial sector ये भी काफी डिटेल में given है. One is the AI application and other is the cyber security aspect in the India's financial sector, because given the financial frauds, so cyber security is a major topic now. तो cyber security एक major topic है. तो यूजुअली इस तरीके के जो हाईलाइटेड टॉपिक रहते हैं वो ज़्यादातर चांस है वो आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट मिल जाएगा. बट पॉइंट है कि इफ यू गेट अ क्वेश्चन फॉर लेटर से 5 मार्क और 10 मार्क, तो एक लिमिटेड स्पेस आपके पास अवेलेबल है. उस लिमिटेड स्पेस में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन डालें, बट प्रेफरेबली लैंग्वेज अगर ये आ जाए तो इट विल बी बेटर. ठीक है, ये लैंग्वेज आपको इंक्लूड करना है. सो विल कंटिन्यू विथ मॉनेटरी एंड देन मूव टू दी एक्सटेंड जो रिमेनिंग पार्ट होगा इस चैप्टर का. एंड टू चैप्टर में जो मेजर वन है वी कैन टेक अप हियर, बाय द जो नॉमिनल वन है वो आप हाईलाइटेड वाले पार्ट से भी रेफर कर सकते हो, रिटेन पार्ट से. बट मेजर वन जहाँ पे थोड़े रिलेट भी करना है, थोड़ा अंडरस्टैंड भी करना है और डिस्क्रिप्शन लिखना है, विल ट्राई टू कवर दैट पार्ट. ठीक है, तो नेक्स्ट विल कंटिन्यू द रिमेनिंग पार्ट एंड द एक्सटर्नल सेक्टर, या फिर सेक्टर वाइज करना होगा तो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और सर्विसेज एक साथ कर लेंगे. ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू रहेगा.